So do let me know whatever the question is. Okay. So you know what a stack is? Yes. So what we want to do, we want to make a special stack. वहाँ पे in that particular stack, we have following functions in a stack. Like we have push, we have pop, we have speak. We want to make a new function in our special stack, which is get min, Okay. in which we want to get the minimum element of that stack. So I'm understanding what you need. You need a data structure with 4 functions, such that for push, pop, and peek, it behaves like a stack. Yeah. So the top of the stack is popped, or you peek the top of the stack. Whenever you push to the top of the stack. But whenever you say get min, it is actually returning the minimum element that you have in the stack. Okay. Yeah. And the expectation is that we try to implement all of them in O1. Okay. Okay. So order 1 for all. Um, So I'm seeing the problem here is that if I use a normal stack, then push, pop, and peek is totally fine. It is all order 1. Get min is going to be order n if I use a normal stack, because I might need to pop till I get I have to pop all elements, and then I have to see which is the minimum, and then I can push them all back. Okay, so that is a problem. Actually, if I keep a min counter also, a min pointer, the problem is what is the next min pointer is a problem. Okay. Okay. So, okay. If I somehow have an ordering of which is the minimum, like for example, in a heap, what happens is the heap always has the minimum on top. Okay. So if I say get min, then that will be order 1 operation. But the problem is whenever I'm pushing into the stack, what happens to the min? Nothing happens. Pop is a problem. Push is fine for the heap, or log n. Okay, but it will be log n instead of order 1 then pushing. Yeah. And popping will be even worse, because I don't know where the element is. The top of the stack element, I don't know where it is. So yeah. Okay, yeah, fine. So heap also may not work unless I come up with a solution. What else can I use? If I use a tree, if I use a binary search tree, let's say pushing, yeah, pushing is log n. Yeah. Wondering popping. Popping is also log n because I can keep it sorted by the place it is on the stack. Okay, peaking is log n. Get min. This is also log n. Yeah, log n most likely. I'm keeping it sorted in the order of arrival. Okay. Okay, now I'm getting a sort of an idea. Okay. Is it okay if I share my screen for a minute? Yeah, sure. Okay, so I'm thinking, what if I have a this is my stack. Sorry. Okay. And I have my elements being pushed in here inside. Yeah. By one. Now inside, if I have some sort of ordering, that let's say this is 1, 2, 4, 5. So if there is an ordering that 1 points to 2 and 2 points to 4 and 4 points to 5. Okay. Now if I take 3 and I push 3 inside, then somehow I need to have a pointer of 2 points to 3 and 3 points to 4, and this element also, this pointer also gets deleted, and then 4 points to 5. Yeah. Okay.
order 1 is a problem. Yeah, no, if I have a stack and I have, instead of a heap, I use a binary search tree, then whenever I'm adding a node, adding to this binary search tree is going to be log n. Whenever I'm deleting a node, deleting from the binary search tree is going to be log n. Finding min is again log n. That is basically on the extreme left. And there is also the final thing, which is peaking. Peaking is again log n. So I have made all of them log n. But we want to make it order 1. So how can that happen? You can try Gaurav to the most famous trade-off in our computer science. More memory? Time space Yes. trade-off. Yeah, okay. Okay, let me try to add some metadata such that it helps me find the minimum. Okay. 1 minute. What happens if I have this? Every time I want to say get minimum, I'm not deleting the minimum. I cannot just delete like that. I need some sort of a way to figure out where it is. Inserting is order 1. Yeah, okay. That is interesting. Is it order 1 for everyone, or is it order 1 amortized? Maybe I should ask that after actually finding amortized algorithm. Okay. What are you looking for is first, if I can come up with a solution, even if it is amortized at least. Okay. If I was able to find a pointer for every element, if I could tell what was the next element that has to be removed, then life would be easy. Like over here, if I could somehow tell that 3 is pointing to 4, so after 3 is deleted, go and delete 4. Yeah. Right. And when I'm inserting 3, that time I should somehow be able to tell after 2 is deleted, go and delete 3. Okay. The next would be deleted. Right. I just want a next pointer for each one of them. If I delete something, then the next pointer is all I need. Yeah. So every time I'm inserting a node, all I need to see is this the... Okay, so let me see if that works. Let us say I have 2, 1. So first 2 comes in. 2 says there is no other pointer, so I have no next. Then 1 comes in. Okay. 1 says that, oh, the current minimum was 2. I'm actually lesser than that, so my next is 2. And I'm the min. Okay, so there's a list sort of thing that I'm creating here. Then 4 comes in. The minimum 4 says no, I'm not. I'm actually not less than 1. So I go ahead. No, but if I do this, it will be order n maybe. What if I just add 1 4 here? Just like that. Okay, let's try. Then I come to 5. I just go and add 1 5 here because you're not this. And then now 3 comes in. If 3 comes here, now the thing is,
I'll just go and add, then it will become 3. Hmm. I should have ideally seen that I'm somewhere over here. Yeah. Okay, now this is where the problem is. Get min. Okay, so the 3, let's say 3 came in. Now what happens? 1 will always be the minimum till you actually Yeah. pop. Oh, okay, Yeah. till you can pop up till that point, 1 is the minimum. Okay, Yeah. so it doesn't matter. It actually doesn't matter. If I keep, you're the minimum, and whoever comes after me is fine. You need to pop yourself to actually beat me. Right. Yeah. So okay, I'm getting the logic now. If you get a element which is smaller than the current minimum, make that point to the current minimum as the next pointer. Okay. If you get an element which is larger than the current minimum, just add it to the end, because there is no way that this can be. It will be ejected before the minimum is changed. Okay. Okay. So yeah, this would be my algorithm. I would have a linked list of the minimum as the head, and the updates to the linked list will be that if I find the element which is being inserted greater than the minimum, I insert it at the end of the linked list. Otherwise, I insert it at the start of the linked list with the current minimum again the head of the linked list. Yeah. Okay. Okay. This is I think pure genius from my side. This is probably the first question people try, but okay, let's see. Should I go ahead with the code, because I think the order complexity of Yeah. all of them seem order 1. Okay, cool. So Maybe Gaurav, we can try this, like, to not to use extra space. okay, Means order of 1 space. order 1 space, no auxiliary space. Okay, I'll just Yeah, I know you can put this. no. So I'll just try to do that also. Okay, now what do I do here? How do I make it order 1 space? You said no auxiliary space. Yeah. So one of the things is every element which is being inserted is an integer. If we have a pointer with it, then we are sorted, because 1 will be pointing to 2, 2 will be pointing to 4, 4 will be pointing to 5, and 5 will be pointing to 3. Okay. No auxiliary space. Okay, when I'm there's no auxiliary space. So what is the auxiliary space helping me do? Every time I want to find the min, I just look at the head of this list. Okay. When you mean no auxiliary space, do you mean that the element should not contain a pointer, or you don't want an additional data structure? Yeah, through pointer we can see that it is very much used. Right. So Without- no pointers would be ideal. Okay. So because I need order in pointers, yeah. So that is like auxiliary space is required. Okay. Okay. Let me see order 1 auxiliary space. Okay. So if I have 1 and 1, okay, maybe I have to stop thinking in terms of pointers itself. Every time I remove min, I can go down and find another minimum. But if I remove min, that's the only time when I need to update my minimum. Otherwise, min is going fine. So maybe. But can you do one thing? Yeah. Yeah. Let's just try to try the case which I just mentioned, or anyone which you can take. Like, yeah. It would get easy for you. Right. I'll just take this. Push 1, 2, 3. Okay.
So this is what we have now. Now we say get minimum. Get minimum is this one. Yes. That is because it is min. Every time I was just adding to the back of the list because it will get popped only after one is popped out. Okay. Now pop. Pop says pop 3. Remove 3. And okay. How do I remove this from the list? Yeah. To remove this from the list, I have to just pop the last element here, no? Yeah, it would be Order N. 1, yeah. So order n, is it? Because we have to iterate through the whole list. Right. It is possible that what if we had something like 3 came in first. So let's say 3 comes here, then 2 comes here, then 1 comes here. So you are inserting something in the list and reversing it every time. No, so the problem here, I mean, with my earlier approach is that the minimum is pointing to 1. Every time what I was doing is I was making 2 point to 3. So actually my earlier approach of a linked list is not efficient enough because if I delete, if I pop, then I have to go and search in the linked list where it exists. One will be order n. Okay. So this is actually not even meeting the criteria, but okay. Interesting idea. Why do I keep a linked list of pointers? What if I just have the minimum in my hand now? The problem is when I get rid of one, then I have to find a new minimum. Yeah. Right. Okay, I'm getting what's happening here. If I am entering a number which is smaller than the top, then only then do I need to do something. Okay. If it is greater than the top, then it won't affect minimum ever. Yeah, it won't ever affect minimum. Okay. Yeah. So firstly, it won't affect minimum means I don't need to add it to the list. So the this stack should be in ascending order. I mean, will be always that the smallest element will be on the top. The next smallest element will be here. The next smallest element will be here. Okay. Okay. Yeah. And do remember, Gaurav, we also have to maintain the functionality of the stack. We can tweak at any time. Yeah. Yeah. And, so that okay. For that, what do we need to do? Okay. We need to maintain the functionality of a stack. Let's say we have a plain old stack. With and just to keep things simple, let's say we have pointers to the next element which is smaller. The next element which will be the next smallest element. We have direct pointer to that. That can happen. Yeah. Okay. So coming back to the example of 1, 2, 3, this element will be pointing here. This element is pointing here. Now minimum is 1. Okay. How do I know minimum is 1? No. I just said that the only smaller elements will be allowed inside, which means 2 will never go in, 3 will not go in. If you say get me minimum, then top of stack is 1. Yeah. Okay. Now push. Push what? Push 0. Push 0 actually pushes 0 here. However, we have a counter of elements up to the minimum. So okay. Firstly, let me draw this diagram afresh. This is the stack. Initially 1 comes.
Then when 2 tries to come in, we don't do anything. We just say stack counter is equal to 2. Okay, 2, or let's say 2 comes here, and this is the min. Now you have another pointer min. Alright. Yeah, I have another pointer min. Then 3 comes in. I don't do anything with the min pointer. When I say pop, that time stack counter from 3 becomes 2. I pop this element. Okay. Then I say that 0, please come inside. So 0 comes in. I see that the min is greater than the current min, so I make that point here, min. Yeah. Okay. And somehow there needs to be a connection between this and this. Yeah, we need to maintain that. Right. Can you try to merge both of your approaches? You were trying something with linked list, now you are trying something with stack. Can you mix them up? Yeah. Okay. So if I go to my original approach of linked list, over here instead of this, what would end up happening is I don't need to save everything. I just need to save the minimums. So first minimum that I encounter is 2. Then I encounter a 1. So 1 is pointing to 2. Let's put it that way. Then I have 4, 5, nothing I add. 3 also I don't add because 2 is smaller. Anytime you ask me for a minimum, I keep saying 1. And so all pop operations are order 1. I never pop from the... Okay. I never... whenever I'm popping, nothing is happening here. And when a pop of 1 comes, that time I pop from this list also. Okay. Right. Now the minimum is 2, and I am also on the part of the stack where 2 is the minimum. Yeah. Okay. So even now pop operations are order 1. I'm not popping anything from the list. If the popping element is the head of the list, then I make the list point to the next element. The head changes. Okay. Push operations are order 1 because I only push to the list if this element is smaller than the smallest element in the list. Yeah, but then also if it minimum keeps on coming, in worst case, it will be order of n. No, because a pushing to the list always happens from the front. Yeah. So okay. 1 point. So are you maintaining a doubly linked list? No, I'm maintaining singly linked list, and always smaller elements are only added. Okay, so you are adding to the front only. Only the front. I can add to the back also. That way, I mean, it's like only. Okay. Yeah. So you are maintaining a stack, basically. Yeah. Now that you say it that way. Popping the front. Yeah, I'm only adding from the front, and I'm only popping from the front. Yeah. So yeah, I'm maintaining a stack. Okay. So we have 2 stacks. Yeah, we have 2 stacks. One implemented through stack, another implemented through list. Okay. The problem that the list is solving is that it is containing the pointer to the next smallest element. Right. And the other stack is solving the problem that when I pop, I know the value of the element. Okay, do you need the value of the... Yeah, you need it. Now, when you peek, that time you need to see the value of the element. Yeah. So it's fine. Yeah. We can even do that. I'll try to code this if that's okay. And on the way, if I come up with something, maybe the code will make it more obvious. Okay. Yeah. Okay, so class okay.
It's interesting. Okay, how do you get rid of? So firstly, let's start with the stack operation. So first one is maybe we can have push I'll just assume that this is a int stack. Yeah, you can assume that. Okay. Okay, we have peak, push, pop, and finally get min. Yeah. Okay. So firstly, if But yeah, for push you can add an argument. for push I'll just add an argument. Okay, and what I'll do here is I'll just make a stack. Okay. Okay, and also I need a min stack. I'll just call it a list. Okay, and in this constructor, I'll initialize. I'm assuming that we can make a list also, but I'm assuming that we know the size of the stack beforehand, the maximum size. Yeah, you can assume it to 1 million. Okay, okay. I'll so it does 1 million is the maximum size, so that will be order n, so that will be fine. Okay. Yeah. Okay. Now apart from this, we also need a int top and min top. Okay. So probably a custom simple stack object would have solved the problem, but yeah. Okay. So when I'm pushing to a stack, I actually say stack. And top is initially 0, and top is also equal to 0. Whenever I'm pushing, okay, what happens to the minimum stack? We'll have a look at that. But otherwise, whenever I pop, I just change this. Whenever I peak, I just print. Okay, and then finally, should I take care of the edge cases also, that if there's underflow, overflow? Yeah, we can ignore them for now. Okay, okay. So get min. So get min is basically the top of the min stack. Okay. Now comes the interesting bit, which is pop does not affect the min stack unless okay, so if the minimum stack top is the same, then I'm just saying that we need to remove elements on both sides. Okay. Okay, actually we have to remove the top anyway, so that's this. Okay, peak is fine, get minimum is also fine, popping is here, pushing is if the minimum stack top is greater than what we have right now,
then we need to change the, okay, we need to insert to the minimum stack. So Yeah. okay. Okay, so these are the operations that we have. If the stack top is the same as minimum stack top, pop from min top and pop top. Over here, peek and get min is fine. Pushing is again, if the stack top is less than the minimum stack top, push into the minimum stack top. And okay, so this is what we have. Okay, now let me see if this works. Custom stack. I'll just set a size of 10 for now, and let me see if, okay, custom stack dot. Can we run on this ID? No, we cannot run here, but what I'll do is I'll try to run it on. So maybe ID1, I'll try to run it on that, and I'll just share my screen. But I'll just write down the operations here. Got it. Yeah. If you want, I can speak them up for you. Which one? The ID? Yeah. I was saying, if you want, I can speak them up, then you can code. Let's push 1, 2, 3, we then get min. Oh yes, yeah. So push 1, 2, 3, then we pop. Is it okay? Yeah. Then we pop. Then we push 0. Okay, we push 0. And then we push 4. And then we do get min. Okay, then we do a get min. Okay. Then we pop 2 times. Then we then we pop 2 times. Okay. Then we push 5. Then we push 5. Yeah. And then we do a get min. Get min again. Okay. Okay. So I'll just take this. Yeah. You can change return types of pop and peek to word. Okay. Or you can just return actually, an integer. Actually, that's a good idea. Yeah. So what I'll do is I'll change this to void, and here I can maybe, okay, just to start off with, I'll just put it as void. But okay. Yeah, I think that's a good catch. I would have broken the compiler there. Okay, I'll just share. Okay, now what's possibly going wrong here? Array index out of bounds. Okay, that's because the stack top distance -1. We didn't pop anything, so no, we didn't push anything in min stack for the first time, and we are just comparing. But it should be 0 now. Yeah. Did I wrongly insert? Yeah, we are inserting for the first time in min stack. Yeah, in no. min stack we'll never insert anything because min stack top will always be 0. Okay. Min stack top is 0. Yes, it is greater than this. Yeah. It's always 0. We can just add then. Yeah, maybe if actually over here one of the conditions I can add is I'm wondering whether you can add top double equal to 0 or right. So if min stack if min top is equal to 0,
or then we have this. to- Yeah, then we definitely push. Yeah. Popping is okay. Popping is okay if min top is this. So there might be underflow, but okay. If min top is equal to 0, yeah, if min top is not equal to 0 means min top cannot be 0. I mean, when we are popping, we have to reach a point where Yeah. so this Yeah. this operation should not be necessary. Peak and get min. Okay. So now let's just run this. Zero zero zero. Okay, that's a problem because when is it printing? It's printing when there is get min. So and this is again a problem. That is because if min top is 0, then min top the value is being set to this. Yeah. Okay, the min top value is not the value we should look at actually. I just realized here. This is the value we should look at because min top is telling where we are pushing in. Okay. Again here stack top and min top. In fact, stack top over here is fine. Okay. Here also is fine. Excuse me. Stack top -1 is what we need to push and min top. Okay, now let's just. Yeah, it's working fine. 101. Okay. Okay, I'll also just. Okay, thank you. Overall, what did you feel like I was able to break down the problem sensibly, or was there like a very clear scope of improving the auxiliary space and still I couldn't see it till the end? पहली बार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर एक्सेप्शनल. Okay, okay, thank you. पता लग रहा है आपने कभी देखी नहीं है प्रॉब्लम. हाँ, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये. मतलब दिस इज बट यू हैवंट सीन इट. इट्स ओके. और ये भी पता लग रहा है कि आपने कभी देखी नहीं. बट वैसे इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोचना मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल नया था. मतलब मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा था. क्योंकि और मैं जिससे मिला हूँ जिनसे मैं ये क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, मैं ये क्वेश्चन काफी पूछता हूँ, तो ऐसे कोई नहीं सोचता. काफी अलग ही तरीका था. आपने एक एक तरह से पकड़ा और उसे देखा. तो भी मतलब ओल्ड स्कूल है वेरी. आपको ब्रेकफास्ट करके हर चीज को सोच के करना मतलब दैट्स वेरी पॉजिटिव. Okay. ठीक है कर सकते हैं इसको बट वो उसको तो फिर वो अगर पहले थी वो आई थिंक Okay, okay. ये जो okay, interesting. नहीं, I like that because इसका ये मतलब है कि I'm still falling back to my fundamentals when I'm scared. जब मुझे नहीं मिल रहा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और वो काफी अच्छा पॉइंट है. अगर आप देखें तो यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आपने अकेला अकेला पकड़ा, कीप पकड़ा, फिर पीएसटी पकड़ा, फिर लिंक्स पकड़ी लाइक यू डू इन योर यूट्यूब वीडियोस. तो मतलब वो काफी रियलिस्टिक है. समझ आ रहा है कि वो एक शॉट में ले रहे हैं. राइट राइट. मतलब कुछ छोड़ा नहीं मैंने. सब कुछ पहले ट्राई करके देखा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है. ओके, नेक्स्ट वाले पे चलो. नहीं तो मुझे ऐसा लगा एक पॉइंट पे कि शायद इंट्यूशन इस प्रॉब्लम का ये था कि आप जब कोई चीज इंसर्ट कर रहे हो तो वो चीज कब तक रहेगी, वो एक इम्पोर्टेंट मतलब इनसाइट है. तो उसमें आपने आई थिंक आपने जो एग्जांपल दिया था उससे भी हेल्प हो रहा था. समझ में आ रहा था कि ये अच्छा ऐसे हो रहा है. बट वो चीज को नेक्स्ट जैसे आप कह रहे हो कि अगर ऑर्डर 1 पे करना है चारों के चार ऑपरेशन, तो आई वाज हेडिंग फॉर दैट ऑर्डर 1 ऑक्सिलरी बिफोर चेकिंग वेदर सबके सब ऑर्डर 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है या नहीं. तो डिलीशन ऑर्डर इन था वहां पे. तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मेरे साइड से हो सकता था. मैंने अज्यूम बहुत जल्दी कर लिया कि हाँ हो जाएगा यार वो.
नया डेटा स्ट्रक्चर को मैंने देखा नहीं कि कितना स्पीड में वो रिमूव हो रहा है, बट हाँ इस चीज में ओके, इस चीज में अच्छा, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, what is the thing which is missing? How do you make it order one in all four operations, like without any auxiliary space? तो इसी पे मैं तो आपको हिंट्स देने की सोच रहा था, हम इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए। मैं ठीक सोच है, रहा था आपको आप एक हिंट देके देखो, मैं शायद ट्राई करता हूँ पकड़ने को। हाँ, खोलो व्हाइट बोर्ड खोलो अपना, वही वाला एग्जांपल खोलो। मैं यहाँ पे आ गया। हाँ, तो आपका दूसरा स्टैक कर क्या रहा है? दूसरा स्टैक एक्चुअली बस ये मेंटेन कर रहा है कि नेक्स्ट वाला मिन क्या है। क्या वो हमें चाहिए? क्या एक स्टैक से हम चला सकते हैं? आप जब मिन को हटाते हो तो नेक्स्ट वाला मिन पकड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला मिन, बिल्कुल अच्छा ठीक है, तो आप जब मिन को हटाते हो तभी ये दिक्कत हो रही है। एक बार हमने मिन को पकड़ लिया उसके बाद तो एंड डिलीशंस के बाद ही आपका जाएगा। बिल्कुल। तो एमोटाइज तो शायद मैं बोल सकूं, शायद मैं पूरा नीचे गया, मैंने निकाला, उसके बाद आप निकालो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐड करो उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक आप मिन तक नहीं पहुंचे। नहीं, तो एमोटाइज नहीं है। अच्छा, आप सोचो कि दूसरा स्टैक हमारा काम क्या कर रहा है? दूसरा स्टैक बेसिकली बहुत सारे लोगों को स्किप कर रहा है जब तक कि नेक्स्ट वाला मिन ना दिख जाए। तो ऐसे देखो, दो स्टैक बनाओ और उन्हें कंपेयर करो कि ये वाला स्टैक खोलो, इसी एग्जांपल को हाँ बना सकते हैं। मैं अगर ये जो आपने एग्जांपल दिया है, जी हाँ जी, यही वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें पहले आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ठीक है, और मिनिमम वाले स्टैक पे सिर्फ 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आपने डिलीट किया, कुछ नहीं हुआ, फिर आपने 0 डाला, उसमें 0 आ गया टॉप पे। हाँ, अब आपने 5 भी डाला, कुछ हुआ नहीं उससे। अगर आपने पॉप किया 2 बार, तो जो आपने किया बेसिकली, तो 5 गया, फिर 0 गया, और यहाँ पे सिर्फ 1 गया, 0, और अभी नया स्टैक ऐसा हो गया, ये हो गया स्टैक, ये हो गया। तो अगर हम देखें, हम दूसरे स्टैक में क्या क्या रखा, हमने रखा तो इन्हीं एलिमेंट्स को। हाँ, किसी रंग का यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को रखा तो है, लेकिन कितने एलिमेंट्स स्किप कर रहे हैं वो भी रखा है थोड़ा सा। तो मतलब कुछ ऐसा कि हम उस एलिमेंट को रखने की जगह, उसके पॉइंटर भी तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, उस एलिमेंट को रखने की जगह मुझे पता लग गया कि वो एलिमेंट ने सेकंड स्टेप में आना है, ठीक है, ये पता लग गया कि वो करंट मिनिमम से छोटा है, ये पता लग गया। उसको रखने की जगह मैं उस पर कोई ऑपरेशन लगा के उसे रखूंगा, कुछ प्रोसेस करते रहते हैं। हैश करके अगर रखोगे भी, नहीं, हैश नहीं, ठीक है, एक मिनट, लेट मी ट्राई टू फिगर आउट। 0 के बाद वो उसका इंडेक्स स्टोर करूं, अगर इंडेक्स स्टोर करूं तो सेम ही हो जाएगा। हैश करके नहीं, हैश करके कोई फाइल मुझे चाहिए, वही वाला 1 चाहिए इसके बाद। नहीं, अच्छा ठीक है, 0 आया, 0 पे तुमने यहाँ पे डाला, जब 0 को निकाल रहा हूँ तो दोनों को निकाल रहा हूँ। अब तुम कह रहे हो कि यार ये एलिमेंट्स जो है वो तो सिमिलर है इसके, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी करंट मिनिमम की जगह
मतलब जो भी जिनको हमें दो दो जगह रखना पड़ता है, जैसे 1 को 0 को मैं दो दो जगह रख रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, उसकी जगह मैं 1 को यहाँ बात रखूँ ही ना, 0 को 0 यहाँ रखूँ ही ना, उस पे कुछ लगा के ऐसा रख दूँ अच्छा अच्छा, ठीक ताकि है, मैं अगले को भी पहचान सकूँ उससे। समझ गया मतलब समझ गया। मैंने इसको अकेला वहां पे नहीं रखा 0, मैंने अच्छा अच्छा इन दोनों अच्छा, का कुछ मिक्सचर बना के वहां रख दिया, और ओके और ओके एक करंट मिनिमम का एक अलग ओके वेरिएबल मेंटेन ओके। कर दिया। तो इसका ये अगर मान लो कि मैंने ठीक है, सबसे सबसे ऑब्वियस तरीका ये है कि 1 मैंने ऐड किया, 1 ठीक है, चलो 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, तो 2 मैंने ऐड नहीं किया, मैंने एक्चुअली 1 ही ऐड किया, और कॉमा में लिख दिया 1 इज द मिनिमम, तो 1 इज द मिनिमम। ये अभी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, जस्ट टू गेट अ आइडिया। ओके, फिर 3 आया, 3 को मैंने बोला कि एक्चुअली ये 2 को हटा देता हूँ, 3 को मैंने बोला योर 1 इज ऑल्सो मिनिमम। फिर जब 0 आएगा तो मैं बोलूंगा 0 योर मिनिमम विद 0। फिर 5 आएगा, 5 योर मिनिमम विद 0। तो मतलब कुछ डेटा 5 में ही रह जाए, ताकि ऐसा लगे कि मुझे पता है कि मिनिमम क्या है, 0 है। और बिल्कुल। अच्छा, सो और इसके लिए हमें साथ में एक और भी चाहिए होगा ना, जिससे हम पहचानेंगे कि हाँ भाई यही मिनिमम था। जैसे आपने ये देखा कि ये दोनों इक्वल है, तो वो तो अल्टीमेटली वो तो चीज एक ही होगी, ये तो आपने अब लिख लिया कि हाँ दो है, हम सोच रहे हैं कि उनका मिक्सचर है कुछ हाँ kind of। हाँ हाँ। तो एक हमें इसमें और अगर मुझे 32 बिट नंबर में मैं 16 बिट्स जस्ट फॉर स्टोरिंग मिनिमम को भी कर सकता हूँ, या ओके 16 बिट्स फॉर स्टोरिंग द वैल्यू, 16 बिट्स फॉर स्टोरिंग मिनिमम, एक ये हो गया, ये ऑर्डर 1 में फिर देगा। अगर हम लोग बोले कि पॉइंटर तो कितने पॉइंटर, अगर साइज ऑफ द स्टैक, हाँ ये तो आपने काफी बड़ा हैक ढूंढ लिया। हाँ ये तो देखो, ये तो सोचो सच नहीं है। कोई भी है, ऑर्डर ऑफ एन तो ऑर्डर ऑफ 1 बना दोगे आप। नहीं, बात तो सही है भाई। मेरे को ये लग रहा था कि मतलब इसको अगर मिक्स करेंगे, अगर उसी में इंफॉर्मेशन डालना है हम लोग को कि आप आपका मिनिमम क्या है, तो मिनिमम नहीं, basically whatever is your minimum plus this is going to give me the answer. So 0 plus 5 is giving me the total answer. 3, 2 plus 1 and 1 plus 1 and 0 plus 1. ये भी हम लोग कर सकते थे। That is also, but again वो है 16 bits यहाँ पे स्टोर करो, 16 bits यहाँ पे स्टोर करो, वही है basically। चलो वो चीज को बाद में सोच लेंगे, पहले मिक्सचर कैसे बनाना है ये तो सोचो। मिक्सचर, मिक्सचर वाला भी काम मतलब पूरा सॉर्ट नहीं हुआ ना हमारा। हाँ हाँ हाँ। 5 को कोई तरीका होना चाहिए बोलने के लिए कि 0 is the thing। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हम इसे आगे और भी उधर भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैं कई बार क्या करता हूँ, कोई मान लो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो उसे ऐसे पूछने लग गया कि इस टैग को हमें स्केलेबल बनाना है, फिर बीच में मल्टी थ्रेडिंग भी ले आओ, मतलब रेस्ट एपीआई भी घुसा दो, मतलब इसको काफी तरह से लेके जाया जा सकता है। मैंने सोचा तो आपसे यही था कि ऐसे करूंगा, इनको कहूंगा कि इसको 1 बिलियन यूजर यूज करेगा, इस पे कुछ ऑपरेशंस करेगा इस स्टैक पे, जो क्लास आपने बनाया, तो आप उसे कैसे स्केल करें। मान लो मैंने एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाई, इसको कुछ पॉप करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल लोग एक साथ पॉप, पीक, पुश, तो एक ही pretty much अगर कोड में देखें तो टॉप जो है वो मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, और मिन टॉप जो है वो एक सेपरेट स्टैक है जो दोनों लोग साथ साथ कर रहे हैं। तो एक तो है आपने थोड़ा, अगर ये एक तो है कि सिंगल थ्रेडेड,
कि सब ऑर्डर्ड हो ही जाएगा, नहीं. हाँ, तो मल्टी अगर थ्रेडेड करना है तो what are the kind of things that we want to give? If we want to be able to ordering of operations भी अगर देखा है तो okay, firstly if we say one second, I'll let's get to this problem also a little bit, try to understand. हाँ, तो getting to the top का thing over here, so this is the place where top, min stack, stack. मल्टी-थ्रेडिंग में टॉप का क्या करेंगे? तो मल्टी थ्रेडिंग में टॉप पे मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं, 4 टाइप के ऑपरेशन है, ऑल ऑफ दीज शुड बी एटॉमिक. तो पुश करते करते अगर किसी ने ये जब रन हो रहा है, ये वाला इफ कंडीशन रन हो रहा है, सडनली अगर किसी ने पॉप कर दिया तो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो एक तरीका ये है कि हर एक ऑपरेशन पे एक लॉक दें कि आप हाँ, तो व्हेन यू अक्वायर द लॉक तभी आप अंदर जा सकते हो. तो एंड द लॉक इज ऑन बिकॉज एवरी ऑपरेशन काइंड ऑफ डील्स विद टॉप. ठीक है. We can take the lock on top, okay, but getmin में जरूरत नहीं है. getmin हाँ, लेकिन अगर पॉप आ गया, पॉप हो गया चीज, मिनिमम कुछ और दिख रहा है, पॉप तो कॉन्करेंटली पॉप चल रहा था, तो यू सॉ समथिंग, यू सॉ इनकरेक्ट मिन, वो भी हो सकता है. ओके, सो consistency, if you want perfect consistency, meaning that there should be if you pop something, does it affect peak and get min? Yes, it can. So concurrently running pop with anything peak or get min, which are read operations, is a problem. Yes. Okay, concurrently running push with any read operations is also a problem. Peak can change, min can change. Okay, getmin So- cannot. getmin, okay. So and if peak and getmin are running concurrently, let's say people are just doing peak and getmin, so those are read operations, they can run concurrently. Okay, so peak and getmin, if they are running, they can run concurrently. Pop is a problem with this, so it needs an exclusive lock. Push and pop going at the same time, yeah, that can be a big problem because top is being continuously updated. So write operations here will need exclusive locks. So these operations also need to be ordered, because if a pop executes, I mean, when we get them, when we get these operations, if someone says push and pop and push, they are different meanings, right? Huh. Okay, so we have to enforce ordering also on our side. So for every stack, what I'll do is I will say that if you're in a particular stack, I will run you, I'll take your requests in the same thread. If you're a read operation, I'll try to get your read lock. इसको हाँ, क्यू से नहीं कर सकते क्या? काफका काफका में अगर आपने अपने ऑपरेशंस पुश किए, टॉपिक्स मान लीजिए हर टॉपिक में एक क्यू है, या एटलीस्ट वन क्यू बिलोंग्स टू जस्ट सॉरी वन स्टैक, कस्टम स्टैक बिलोंग्स टू एट मोस्ट वन टॉपिक. ठीक है. तो आप अपने सारे वो क्यू के इवेंट से ऑपरेशंस उस टॉपिक पे पब्लिश करते हो. सब्सक्राइब करते टाइम पे वो हाँ, डेफिनेटली यस, यू आर राइट, वो ऑर्डर्ड तरीके में ही लेगा पार्टीशन से, सेम टॉपिक से. एंड अभी ऑर्डर तरीके में आ गए, अब आपके साइड पे क्या करें? तो इफ यू हैव अ getmin which is running, and a peak operation comes in, so you try to acquire a read lock. Multiple people can acquire a read lock at the same time, and operations can execute simultaneously. So that part is okay. As for a write operation, it is always going to go for a exclusive lock. An exclusive lock requires the read lock to be released. Then only then are you going to go ahead and perform this operation. So that is how I would handle concurrency in this case. Okay, मतलब आपको कुछ यहाँ पे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब ठीक था. ऐसे इसे और भी आगे लेके खत्म नहीं होगी कभी 5 बजे, तो
मतलब अब इसे 50 मिलियन या 500 मिलियन रिक्वेस्ट पे लेके जाना है तो क्या होगा? हाँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट में अगर बहुत ज़्यादा स्केल कर रहे हो स्टैक को तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए सेम स्टैक के लिए। एकदम रियल टाइम अगर करना है आपका मैं बताया तो आपका हम कुछ और काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हाँ। कि मान लो मैंने जो देखा वही इंकन्सिस्टेंसी पे आ जाएगी कि मैंने देखा कुछ और था बट काफका में और बहुत कुछ कुछ पॉप हो गया, फिर जो जो मेरा पीक था उसने कुछ और रिटर्न किया। समझ रहे हो शायद? बिल्कुल, हाँ 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 नहीं, अगर अगर मैंने एक तो बात ये है कि ठीक है चलो पुश और पॉप मैं बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग दे रहा हूँ, दिस इज परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अगर इवेंचुअली कंसिस्टेंसी कर दिया which will speed up a lot of the writes because they will be running in parallel or concurrently. Yeah, that will return a lot of different, मतलब कुछ भी दे देगा वो फिर ज्यादा ही हाँ हाँ वो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा शायद इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए। The argument also is that multiple अगर stacks use हो रहे हैं तो all of them are can run concurrently. That is there. अगर आपके पास multiple stacks है वो आप concurrently, अगर एक ही stack पे millions of users हैं तो बहुत ज़्यादा contention होगा, बहुत ही ज़्यादा contention। स्टैक्स बढ़ा दे। बिल्कुल ठीक किया, स्टैक्स बढ़ा देते हैं। फिर अब मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बनाने स्टैक्स अगर आपने बढ़ा दिया तो डिपेंड करता है कितने यूजर्स कौन सा स्टैक यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं, अच्छा ठीक है हाँ, अभी मान लेते हैं कि स्टैक पे आपने चेंजेस किए, डेटाबेस अगर है तो वो डेटाबेस का ऑपरेशन हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, db। तो हम लोग यहाँ पे मिन टॉप भी सेव होना पड़ेगा और अभी द db इज अ सेपरेट एंटिटी, उसमें ऑर्डर्ड सेव्स आने पड़ेंगे, but क्योंकि we are running these in order, we can assume that the db is also, no we cannot assume that because हो सकता है db में सेव ऑपरेशन चला गया और वो खुद ही कर रहा है अपने में, तो db में भी we have to ensure कि लॉक्स जो रहे, मतलब db में एक्चुअली कर सकते हैं हम लोग ऑर्डरिंग। यहाँ पे जो सेव है इसका जब एक्नॉलेजमेंट आए तभी आपका ये ऑपरेशन खत्म हो, तो ये सिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक द db saves asynchronous, that still requires ordering. So in fact on the db save यहाँ पे आपको ये अगर सिंक्रोनस हुआ, ठीक है ये सिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस है, ये वाला एसिंक कर सकते हैं क्या? एसिंक्रोनसली सेव किया तो क्या होगा? देयर इज नथिंग टू सेव हियर इन द डीपी एक्चुअली, स्टैक का टॉप आप निकाल रहे हो, तो रीड ऑपरेशंस पे तो आप सेव कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ पुल कर रहे हो फ्रॉम द डीबी। हो सकता है आप डीबी से पुल कर रहे हो, आपने बोला कि ये मेमोरी में है ही नहीं मेरे पास, तो अच्छा डीबी से पुल करोगे तो रीड है, रीड इन द डीबी, गेट फ्रॉम डीबी, ओके ओके हाँ उसमें मल्टीपल लोग रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो टेबल है या जो वो डेटा एंट्री है उसका आपको उसका कंसिस्टेंसी लेवल आपको वैसे सेट करना पड़ेगा कि उसमें एक्सक्लूसिव लॉक लगे फॉर राइटिंग एंड रीड लॉक्स लगे फॉर रीडिंग, राइट? ओके आई थिंक काफी कॉम्प्लेक्स, यूर राइट, काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये। I think which is one of the testament to any problem. Any simple problem can be made complex through scale, concurrency, and by just duplicating the data structure and saying कि ये 50 से आप करके दिखाओ। तो और इसमें ये भी है ना कि आप बेसिक डीएसएल को पूछा आपने स्टेप, वहां से आप को चले गए, हाँ आप डिजाइन पे चले गए हो थोड़ा सा, डीबी डिजाइन पे चले गए हो थोड़ा सा, या एटलीस्ट लॉक्स वाले लो लेवल डिजाइन पे तो चले ही गए हो आराम से। बिल्कुल थ्रेडिंग वगैरह को आराम से कर सकते हैं।
कोड लिखने को वो कर सकते हैं। इसका HLD कोड में घुस ही गए, हाँ HLD सॉरी HLD में तो घुस ही गए, जैसे सिंक्रोनाइज वगैरह दिखा सकते हैं यस कोड में। यस यस जी हाँ, यस वो और HLD में तो घुस ही गए हम, DP वगैरह आ गया फर्स्ट से, हाँ। और यार जहाँ मर्जी ले जाओ, ये हमारे करेक्ट आई थिंक यू आर राइट। सामने वाला बंदा सेंसिबल है या नहीं उतना तो पता चल ही जाता है। ये एटलीस्ट पता नहीं है। करेक्ट ठीक है हर्षद, दिस इज ग्रेट, आई थिंक दिस इज अमेजिंग, थैंक यू। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट मुझे तो लगा आई नो इट इज तुमने का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऑनेस्टली शायद इंटरव्यू के टाइम पे भी थोड़ा प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से एकदम हाँ राइट सॉरी नहीं तो ब्रेक डाउन करना है इसको। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट लेसन अगर कोई देख रहा है तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो तो जल्दी कर दो। डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करो, सॉल्यूशंस ट्राई करो। लाइक हर्षित सेड, द क्वेश्चन कैन देन बी diverted or move towards a LLD round, low level design mein, where you are suddenly being asked things like concurrency. You are being asked that how many threads do you want to keep for how many number of users. So it can, and then you can always go for scale, and you can go for complexity in terms of you have multiple stacks. How are these stacks going to interact with each other? There is another layer, the database layer, which is totally separate from the code layer. So whatever you do here, you have to kind of enforce through code that the database also does the same thing. So okay, this is great. Thanks so much Harshit for coming, and if with your consent, I think putting this out there on YouTube is really going to help. So yeah, thanks to you for calling me calling here. me here. thank you everyone for watching. We'll see you next time. Bye bye.